नमस्ते, सभी को स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से। और बात करेंगे आज आप लोगों के साथ एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक शेयर जंप्स नियरली 4% टुडे आफ्टर Q3 result and brokerage the bullish target price. Axis Bank's take an outlook brokerage were largely bullish on the private sector lender or citing the improving credit cost and visibility or resilient profitable metrics and the active folios valuation। और जो एक्सिस बैंक शेयर रोज नियरली 4% आफ्टर Q3 रिजल्ट बेस्ड एस्टिमेट और नेट प्रॉफिट ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 रोज 3% टू रेज 6,489.6 crore और बेटिंग फॉर एक्सपेक्टेशन एंड ब्रोकरेज अपडेट द एक्सिस बैंक सिटिंग द इम्प्रूव एसिस। दोस्तों आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं एक्सिस बैंक के बारे में। और आप लोगों ने देखा एक्सिस बैंक के जो Q3 का रिजल्ट, इस बारे में आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा जो शेयर्स ऑफ एक्सिस बैंक Ltd जंप्स जो नियरली 4% और प्रेजेंट इन द अर्ली ट्रेड ऑन ट्यूसडे January 27 after the private sector lender reported a better than expected result for Q3 और जो फाइनेंशियल ईयर 2026 the strong financial performance drew a string a bullish brokerage and response on earning or feasibility assistant qualities and valuation. Axis Bank stock was trading of rest 1,306.6 up 3.86% and extending this strong run over the past year. The stock has gained 37.3% over the last 12 months and surprised outperforming for the Nifty 50, which is up about 9.7% over the same period. Axis Bank Q3 result beat and estimated. Axis Bank report a 3% year-on-year raise in the net profit to raise 6,489.6 crore for Q3 financial year 2026, betting the CNBC TV and poll estimate of the 6,046 crore net interest income grew 5% on year to raise 14,286.4 crore, also ahead of the street expectation and reflecting the steady core and lending performance. Assist our quality improved sequentially with the gross NPS and earning to 1.40% from 1.46% in the September quarter, and net NPS declined to 0.42% from 0.44% in the absolute terms. Gross and NPA will cutter on the cutter while net NPS edge up marginally। और दोस्तों आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है जो एक्सिस बैंक का बारे में और एक्सिस बैंक का जो Q3 रिजल्ट, इस बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा है। थैंक यू।